A very good evening to everyone. So today the purpose of the session is the questions from social justice. Okay? So before we begin, on the similar pattern that we did in yesterday's session, we'll just try to broadly analyze that what were the nature of the questions and how are we supposed to prepare. Okay? One heads up, it is slightly more dynamic as compared to society. Reason being, for society, at least you have NCRTs. But when it comes down to social justice, we just don't have any support system. But I can assure you that every year there are 3 to 4 questions. Maximum is 4 and minimum what we have seen is 3. So 3 to 4 questions. So approximately the weightage would be somewhere around 40 to 50 marks. That's the usual trend. Okay. You don't have to go for social justice separately. Whenever you are preparing for Indian society, just extend it more and you will venture into the area of social justice. That is what's supposed to be done. Now, if you ask me that how are we supposed to prepare for this area, I would just say that the entire social justice, there are 3 broad categories. The first category is health, education, and human resource. The second category that we have is vulnerable sections. And the third category that we have is poverty and hunger. These are the 3 broad categories you divide your entire social justice. Is that clear? Now, let us suppose that we have the first category in which I was talking about health, education, and human resource. And now let us say you have to prepare for the topic of health. See, you would not get material at one place. You will have to create the material. But once it is created, it is going to come very handy in your preparation. Whenever you are preparing the topic for health, you start with concept of good health. You link it with its manifestation. And manifestation broadly can be associated with social, economic, political, ecological. As in, if you ensure a good health, how it is going to be beneficial for you in social domain, in economic domain, political domain, and ecological domain. Once you are done with this, prepare the tiers of healthcare system. When you prepare the tiers of healthcare system, prepare elaborately primary and secondary healthcare. See, the most important is primary. But along with that, you can also prepare secondary and tertiary. When you are preparing primary healthcare, generally, what is primary healthcare? What are the objectives of primary healthcare? What are the goals of primary healthcare as defined by Alma Ata Declaration? Let us say what are the issues with respect to primary healthcare and what needs to be done. And when you are preparing issues, it is but obvious you are going to prepare it through statistics. So automatically a comprehensive coverage has been done. Once we are done with this, broadly prepare issues with respect to healthcare system. A very comprehensive preparation of issues is required, and that should be supported with your data. Comprehensively, because many a times questions can come from these areas, so prepare it very comprehensively. Once we are done with this,
prepare your sustainable development goals. There was a question in past, what were the millennium development goals related to health and to what extent India has achieved it? अब millennium development तो पुरानी कहानी हो गई. The new story is sustainable development goals. They might ask you that what are sustainable development goals with respect to health? And this time the question can be, to what extent we are prepared to achieve the targets by 2030? Is that very clear? So whenever you are preparing your sustainable development goal, first prepare what are the goals. Within that, you prepare what are the targets. Then you prepare to what extent we have achieved those targets. What were the government efforts? What were the, or what are the lacunas? And what more needs to be done? Is this making sense? मैं एक टॉपिक आपको बताना चाह रही थी कि आप खुद से कैसे प्रिपेयर करते हो. So this is how you prepare the content. Once we are done with this, then you link it with the key government effort, which in case of health would be आयुष्मान भारत. कोई तो एक पॉलिसी या प्रोग्राम होता है ना, दैट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट स्टडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. हेल्थ कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट एनालाइजिंग आयुष्मान भारत. और ये करंट रहेगा. आप ये नहीं कह सकते अरे आयुष्मान भारत तो पहले आया था. फर्क नहीं पड़ता. इट इज द कोर फ्लैगशिप प्रोग्राम एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड. वंस यू आर डन विद दिस, post that, now comes, this is the dynamic portion, contemporary issues. ये depend करेगा when you are writing your mains. Till here everyone has to prepare. Contemporary issues depends which year you are writing your mains. So whenever you are writing your mains, just before that, whatever is there in the index of mains 365, cover it from there. That would be more than enough. हम जब मेंस 365 बनाते हैं, if you have ever gone through the social issues वाला portion, it is always starting with vulnerable sections. Then we talk about health and education. Then we talk about poverty and hunger. So we are actually catering to the topics which are there in your social justice. Is that very clear? So contemporary issues would depend upon mains 365. This is how the comprehensive preparation of the topic has to be done. जैसे मैं एग्जाम्पल देके बता देती हूँ. अब मेंस 365 मैंने बोला और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ करंट में क्या पढ़ना है. जैसे कि आप पढ़ सकते थे डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर. दैट कैन बी अ टॉपिक. ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर. Similarly, you could have studied issues of mental health. We could have discussed problem of lifestyle diseases. These are nothing but contemporary issues, and this will keep on changing as in when you are preparing. जैसे आज से 2 साल पहले हम वैक्सीन हेसिडेंसी पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, बिकॉज कोविड के टाइम पे वैक्सीन हेसिडेंसी वॉज द टॉपिक. ठीक है, सिमिलरली कोई रिपोर्ट आ जाए, ठीक, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रिपोर्ट मिसिंग मिडिल विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस कवर. So that was when in use, then you will have to study. Otherwise, for the easiest thing, ये आपका यहाँ तक standard content है, ये आपका standard content है, ये सब तैयार करेंगे. Once the standard content is over, then your contemporary issues will completely depend upon your current affairs. But did you get an idea that how this topic has to be prepared? ठीक है, अब सबसे easy काम जब यहाँ तक पहुँच ही गए तो
पता नहीं क्यों बता रही हूँ, बट एनीवे, कि जब ये पूरा बना ही रहे हो तो यहां पे डाल देना 2-4 कोट्स, यहां पे डाल दो 2-4 एनेक्डोट्स, यहां पे डाल दो कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स विच कैन बी एम्यूलेटेड, यहां पे डाल दो एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अब हो गया ऐसे तैयार। समझे मैं क्या कहना चाह रही थी? ऐसे तो पढ़ ही रहे हो, आधा 1 घंटा और लगेगा, ये 4 चीजें और डाल दो। अब हेल्थ एज अ टॉपिक ऑफ एसे इज ऑल्सो रेडी। अब वो कुछ भी पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर। Is that very clear? So this is how you have to prepare. Similarly, you will prepare for education. Similarly, you have to prepare for other areas as well. Is that clear? तो ये पहली चीज clear हो गई सबको? Can I move to the questions? See, there are broad 3 areas. The first category I already told you about is health, education, and human resource. These are some of the questions which were asked in the past. Now, few things that you have to keep in mind is that the questions are often asked from this area. So these were the questions which were asked in the past. Very quickly, let's just have a look at question number 2. Identify the Millennium Development Goals which are related to health. Discuss the success of the actions taken by the government for achieving the same. As simple as that. Okay? Similarly, Professor Amartya Sen had advocated important reforms in the realm of primary education and primary healthcare. Full stop. What are your suggestions to improve the status and performance of primary healthcare and education? They're asking you to give your suggestions. They are not asking the reforms suggested by Amartya Sen. That was basically a catch. That it was just to create a pressure, because in one go people might think that they're asking you the reform suggested by Amartya Sen. They are not doing that. So you have to be very, very calm while you are reading the questions. Similarly, demographic dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled, and creative. What measures have been taken by the government to enhance the capacity of the population? So in one question, they were asking your suggestion. In other question, they're asking the steps taken by the government. So if you prepare a topic in a comprehensive manner, whichever is the nature of the question, you will be able to answer. Is that very clear? Now, before we start with this portion, there are few things that you keep in mind. Whatever question often asked from health, education, or human resource that is being asked, keeping in mind demographic dividend. That is being asked, keeping in mind sustainable development goals. That is being asked, keeping in mind the aspiration of our nation to emerge as global power. It is being asked, keeping in mind the performance of India on social indicators. So whenever you are asked these questions, keep these 4 points in mind. And the reason is, many a times, one of these 4 becomes your introduction. Is that very clear? कल ही हमने बात करी थी ना, इंट्रोडक्शन में या तो डेफिनेशन होती है, या डेटा होता है, या कॉन्टेक्स्ट होता है, या प्रीमाइस होता है. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इमर्जेंस एज ग्लोबल पावर, ये सारे आपके प्रीमाइस हैं. आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं in order to answer the question. Let me just show. This is the first question. Read the question. It's a 10 marker. The crucial aspect of development process has been inadequate attention paid to the human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. Did you get the question? It's a simple question, 10 marker. वो ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट में कमी है वो इसलिए है because attention is not being paid to human resource development. So now they're asking you, what are your suggestions? Is that very clear? So in such a question, can I start with what exactly human resource development incorporates? That is one introduction. Second introduction is, in the backdrop of demographic dividend, if we do not ensure human resource development, dividend will turn into disaster. So the first introduction was based on definition. What do we mean by human resource development? Second introduction is based on premise. Third introduction can be based on data.
that India's performance with respect to Human Development Index has slipped by 2 positions. So in that backdrop, investment in human resource development is the need of the hour. Is it making sense for everyone? Okay. Now, I always told you, in fact, in yesterday's session, we talked about how every answer has 4 parts: introduction, linking statement, body, and conclusion. In this question, maximum if you are writing that what are the reasons that we are not able to pay attention to human resource development, that is only the linking statement. That is not the body. Most of the students, while attempting the question, might have written that what are the issues with human resource development. वो तो question ही नहीं है. It's a 10-marker question which is directly asking that give your suggestions. उन्हें भी पता है कि human resource development has not been paid adequate attention. So if you are wasting your time and space in writing that what are the issues with human resource development, you will not be fetching marks because that's not the content. At max एक linking statement लिख सकते थे. There were maximum or multiple reasons behind not investing or paying attention to human resource development. For example, policy ambiguity. For example, lack of investment. For example, infrastructure deficit. And then immediately you will come to what are your suggestions. Is it making sense? ठीक है. Now, क्यों मैंने ये कहा linking statement लिख दो? क्योंकि that linking statement will actually tell you what are your suggestions. हमने पहले बोला पॉलिसी में ambiguity है, तो पहला सजेशन क्या होना चाहिए? क्लैरिटी इन पॉलिसी मेकिंग. कोहेरेंस आ जाता है आंसर में. Is it making sense? ठीक है. अब देखो, in social justice, it's my personal experience. If you get a direct specific question, बात अलग है. But if you get an analytical question, support your arguments with example. That will give you edge over others because everyone is writing the argument. But if you have the exact example to justify your argument, you are better placed. For example, the first point we are saying, there should be clarity with respect to policy making. The entire policy needs to be streamlined. It will ensure better implementation and efficiency. Do I have an example to prove this? Yes, we do have an example. For example, health is a state subject. One of the major issues in health sector is privatization. Because along with privatization, there is lack of regulation. So do we not have any mechanism for regulation? No, we do have. Clinical Establishment Act. That is there to regulate the health sector. But the problem is, since health is a state subject, many of the states have not implemented the act. So there has to be policy clarity so as to ensure better implementation and efficiency. Similarly, with respect to national education policy, it's a very, very progressive policy. But then there should be clear-cut, defined roles with respect to all the stakeholders in order to ensure better coordination and governance. Is it making sense? So, एक था point, दूसरा है example. Is it clear? और human resource development में यही 2-3 चीजें आती हैं. Health, education, skill development, तीनों से related examples दे देना. Is it making sense? Second example, that there has to be investment. अभी बोला ना, investment की कमी है. तो government funding is required. So there has to be an augmental aspect in the budget allocation as far as health and education is concerned. Do we have an example? Yes. National education policy says minimum 6% of the GDP should be spent on education. Similarly, National Health Policy of 2017 says at least 2.5% of GDP should be spent on health. This is nothing but the suggestion that you are giving. तीसरा है infrastructure की कमी है. So you have to ensure robust infrastructure. Otherwise, none of your schemes will work. Do we have an example? Yes. Analysis of Ayushman Bharat. Ayushman Bharat is providing you insurance cover. You can avail free of cost the health infrastructure, but only in impaneled hospitals. But to be an impaneled hospital, you need to meet certain basic infrastructural criteria, and that is missing.
So otherwise, if infrastructural deficit is not addressed, then we cannot ensure that Ayushman Bharat would be a success. Is it making sense for everyone? Similarly, technological integration. कुछ बेसिक चीजें हमेशा याद रखना, मैं क्लास में भी बोलती हूँ, 4AQ, ये आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा. अवेलेबिलिटी, accessibility, affordability, awareness, and quality. If you use technology, all these things can be ensured as far as health education is concerned. कैसे इंश्योर कर सकते हैं? सजेशन दे रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें टेलीमेडिसिन को इंट्रोड्यूस करो. टेलीमेडिसिन अगर इंट्रोड्यूस होता है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, ऑल कैन बी इंश्योर्ड. सेकेंड, हमने कहा कि जन औषधि, generic medicines, Jan Aushadhi should be clubbed with e-pharmacy so that generic medicines can be made available at your doorstep. Are you getting the point? What are these? These are nothing but suggestions. Rural area में एक model digital health center needs to be created, which can or which will serve as an example to be emulated by others. Similarly, in the education, ed tech sector, that needs to be adhered to. Why? जितना हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे उतना आउटरीच बढ़ जाएगा, उतना एजुकेशन कैन बी पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड, उतना लर्निंग आउटकम कैन इंप्रूव. So there are too many benefits of integrating technology. Just give some of the suggestions. It's just about suggestions. Innovative suggestions, though, you will fetch marks. Next, it is saying social empowerment. See, you need to understand. Human resource में, if I have to ensure that demographic dividend is not turning into disaster, I need to ensure that every section of the population is transformed into a human capital. And one of the significant section in our society is women. So if I want my dividend not to turn into disaster, I have to ensure women inclusion. Is it making sense? So do I have any suggestions? Yes, we have a suggestion. That examples or initiatives such as Son Chiraiya, that is basically an initiative to promote urban SHG products in order to ensure financial empowerment of women. Such initiatives can be replicated. Is it making sense? Again, I'll say you don't have to write every point, but you have to write some of the points. ठीक है? Then, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट गवर्नमेंट के पास हर बार फंडिंग हो ये जरूरी नहीं है. तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज कैसे करें? कॉन्क्लेव इन्वेस्टर समिट्स, इट कैन बी एन एफिशिएंट वे टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. सजेशन पूछा है तो हर एक आर्ग्यूमेंट का एक एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ने कुछ अभी तक करा नहीं है. There are some initiatives which have already been taken by the government. However, more needs to be done. Because these initiatives are not only transforming your resource into capital, it is also going to ensure that India is taking the path of development. So it is not only beneficial for the individual, but also the nation at large. And that can be mentioned. Is it making sense? Now, before I move to the next question, one takeaway. Whenever you write an argument, please supplement it with example. That's the takeaway for this question. Otherwise, question is not difficult to answer. The more, और आप जब खुद पढ़ोगे ना, आपको तब realize होगा, हर एक argument के बाद एक example है. आपको ये लगेगा that the aspirant has put in the effort. So for that, collection of examples are very much required. Is it making sense for everyone? Can I move to the next question? Read the question. गुड, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, इसमें मैं आपको एक और बात बता सकती हूँ. तो जस्ट रीड द स्टेटमेंट. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई to various sectors. Full stop. In the context of the statement, analyze the linkage between education, skill, and employment.
To be honest, this year they have not asked any specific question. नहीं तो हर बार क्या होता था, पॉलिसी पे पूछ लेते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछ लेते थे, कोई एक्ट पूछ लेते थे, कोई कमीशन पूछ लेते थे. इस बार तीनों क्वेश्चन एनालिटिकल हैं. और जब एनालिटिकल क्वेश्चन होता है तो आंसर राइटिंग स्किल मैटर्स द मोस्ट. Is this very clear for everyone? Again, read the question quickly and tell me what should be the introduction. I am just interested in the introduction. इसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इंट्रोडक्शन का. तो ये मत सोचना टॉपिक नहीं पढ़ा है कैसे बताएं. नहीं, किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है सवाल, फिर पढ़ो. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द statement. Statement needs to be explained in the introduction. Did you get the point? जिसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछते हैं तो पहले एग्जामिनर को बताओ तो कि कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया मुझे सर. So the context has to be written. जब भी क्वेश्चन होगा in the context of something, in the backdrop of something, ठीक है, with respect to something, तो वो जो something है ना, that has to be written in the introduction. That's the key. Is that very clear? Let's come back to the topic. It says in the context of the statement. Statement क्या है? Skill development programs have succeeded in increasing the human resource supply to various sectors. You just need to prove this. कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए थे उनकी वजह से सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज इंक्रीज्ड. सो दैट्स योर चॉइस हाउ यू चूज टू डू इट. फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 different ways. As per World Bank, it says if you invest in skill development, your unemployment reduces, your underemployment reduces, your productivity increases, your standard of living increases. Has something happened in context of India? Yes, we have the data from economic survey that from financial year 2017 to 2023, 1.1 crore people have been trained. They have been given the skill, and at the same time 21.4 lakh people have been identified for the second phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. And because of the skill development programs, तो 2-4 skill development program बताओ कि सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं है, there are other schemes as well. For example, green skill development program, or there is apprenticeship program, or there is scheme like Sankalp, and all of these initiatives have led to increase in human resource supply to various sectors. अब हमने context establish कर दी, अब यहां पे ये काम खत्म, हमारा इंट्रोडक्शन और लिंकिंग स्टेटमेंट दोनों बन गए. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द बॉडी. इज दिस वेरी क्लियर? अगर मैं शुरू करती, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं सबसे पहले एक वर्चुअस साइकिल बनाती. I would have started with education. I would have linked it to skill development. I would have linked it to employment. And again, I would have connected it to education. And I would have made a virtuous cycle, not a vicious cycle. It's a virtuous cycle. तो मैं शुरुआत उससे करती. उसके बाद मैं बॉडी में 3 पार्ट्स इंट्रोड्यूस करती कि क्यों एजुकेशन इज द फाउंडेशन. बट ओनली एजुकेशन इज नॉट इनफ. Along with education, there has to be skill development. Only skill development is not enough. There has to be lifelong skill development. And not only technical skill, but also social skills. Because when all these 3 factors are combined together, your chances of employability increases. And once you get employment, ऐसा नहीं है your education or skills comes to an end. You can further enrich your education and skill even at the workplace. Apprenticeship programs होते हैं. Mentorship is provided by the leaders. Even on the job training is being facilitated. As a result, the cycle gets completed. Education base है. बिना education के skill को absorb करोगे कैसे? Once you have absorbed the skill, regular upgradation of skill is required. When these 2 factors combine, you become desirable in the labor market. Once you get the job, you can further enrich your education and skill development. It forms a complete virtuous cycle. So the body gets divided in 3 parts.
Is that clear? तो आप start करो how education is the foundation. So when we seek basic education, हम foundational abilities develop करते हैं. हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो सबसे पहले स्कूल लेवल में हम अपनी फाउंडेशनल एबिलिटी डेवलप करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. फिर स्कूल से हमको फाउंडेशनल नॉलेज और बेसिक स्किल्स मिलती हैं, विच लेटर वी कैन यूज इन आवर रियल लाइफ सिचुएशन. बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, nature of work is changing. So the standard education which was being imparted no longer is enough. It has to be comprehensive in nature. उसमें टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स भी होने चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए. सो इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एजुकेशन के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फंडिंग है, ना क्वालिटी टीचर्स हैं, ना डिजिटल एक्सेस है. सो व्हेन ऑल दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, then chances of having a good qualitative education is less. Never, matlab, having said that, the thing is education creates the foundation. Go through. Education institution furnish the fundamental abilities. It will provide you foundational knowledge and basic skills. But then there is rapid advancement of technology, changing nature of work. It has transformed the requirement at the employment space. In this context, education needs to be broadened, but there are some challenges. Is it making sense? It's a 15 marker. You have scope to write these points. Next, skill development. This is always a bridge. Sirf education enough nahi hai. India skill report says 45% of the graduates are not worth employment. So the problem is the quality of education, the skill which is being imparted, that should be in link or in sync with the demand of the labor market. तो skill development is required. और उससे क्या फायदे होंगे? अगर आपको वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती है तो हमारे पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. हर कंपनी चाहेगी ऐसे इंसान को रिक्रूट करना who also have specialized knowledge but at the same time has also practical skills. So automatically chances of a skilled personnel fetching the desired job is very high. But यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलेगा, because Daniel Goleman says success at workplace only 20% depends upon your IQ but 80% depends upon your EQ. So in that context, social और soft skills are equally required. तो communication skills कितनी अच्छी हैं, जैसे दो लोग हैं, दोनों same institute से पढ़े हैं, दोनों के पास same technological skills है, then the company will prefer a person जिसके communication skills अच्छे हों, जिसमें team spirit हो, जिसमें problem solving attitude हो, constructive resolution of conflict हो. तो along with technical skill, what is required is soft skills. बट फिर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर आ जाती है स्किल्स को लेकर कि इंडस्ट्री और एकेडमिक का लिंकेज नहीं है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन नहीं है, विमेन का रोल इन स्किल डेवलपमेंट इज लेस. सो ऑल दीज इश्यूज नीड्स टू बी addressed. Is this making sense for everyone? Do we have a data to support that how important it is to ensure skill development? Yes. World Trade Organization says that if we are investing in skill development, GDP of India will rise by 3% to 5%. Is it making sense for everyone? यहाँ तक clear है? Last. अगर आपके पास skill development है, chances of fetching employment is very high. Is it making sense? और बहुत जरूरी है स्किल डेवलपमेंट की, नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न इनटू डिजास्टर. टीम लीज का एक डेटा आया है कि इंडिया को कम से कम 30 मिलियन डिजिटली स्किल्ड पीपल चाहिए बाय 2026. और जो आज के स्किल्ड लोग हैं उनमें से कम 50% नीड्स टू बी रीस्किल्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतने फास्टर पेस पे चेंज हो रही है. तो केवल स्किल डेवलपमेंट नहीं, लाइफ लॉन्ग स्किल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड द आंसर. इज द लिंकेज, बाकी छोड़ो, क्वेश्चन क्या था? तीनों के बीच में लिंकेज बताना. हमने एस्टैब्लिश कर दिया, तीनों के बीच में लिंक दिख रहा है. एजुकेशन का लिंक स्किल से, स्किल का लिंक जॉब से,
जॉब का वापस लिंक एजुकेशन एंड स्किल से. इज इट विजिबल? आवर जॉब इज डन. इज दैट वेरी क्लियर? मुझे कभी कभी लगता है कि मोर देन स्पेसिफिक क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस आर इजी टू आंसर. क्योंकि स्पेसिफिक में क्या होता है, यू कैन ब्लफ, either you know or you don't know. लेकिन analytical question just has one challenge, writing skill. If you nail that, it is easy to answer. This year, hands down, the paper was easiest so far. सोशल जस्टिस का पेपर इतना सिंपल नहीं आया. आपने नोटिस नहीं करा, पहले भी ह्यूमन रिसोर्स था, अभी फिर ये ह्यूमन रिसोर्स. अब अगला देख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वल्नरेबल सेक्शंस. ये सेक्शन है वल्नरेबल सेक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है. एक बता देती हूं कैसे पढ़ते हैं, फिर we'll proceed with this last question. This is the last question. Let me just show you how to study vulnerable sections. कोई भी vulnerable section हो. Let us say we'll take example of old age people. Can we say they are one of the vulnerable section? You start with statistics with respect to old population. Then you identify the issues with respect to old population. और ये जितना comprehensive होगा उतना you will be well prepared. Comprehensive. Once we are done, then you will be talking about government efforts. Usually government efforts को हम divide करते हैं constitutional provision, statutory acts, government schemes, if there is any judicial case law और some international convention. क्योंकि यूपीएससी किसी से भी सवाल पूछ लेती है. कभी पूछेगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल्स, कभी पूछेगी लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल्स, कभी पूछेगी केस लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस. ठीक है ना? तो अगर उन क्वेश्चंस को आंसर करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू प्रिपेयर योर गवर्नमेंट एफर्ट्स लाइक दिस. But so many government efforts, yet we are saying old people are vulnerable. That means there are some lacunas, and since you are going to be an administrator, you should always be prepared with a way forward. आप सारे vulnerable sections ऐसे तैयार करोगे, फिर कुछ भी पूछ लें, you will be able to answer, no matter what question is. Is that clear? But one heads up, हर vulnerable section से related कुछ की एक्ट होता है, वो चाहे करंट अफेयर्स में हो या नहीं हो, यू हैव टू प्रिपेयर इट. आप नहीं कह सकते चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट तो मैंने किया नहीं क्योंकि करंट में नहीं था. नहीं, करना है. आप नहीं कह सकते मैंने पॉक्सो नहीं पढ़ा, मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं किया, मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट नहीं किया, ट्रांसजेंडर एक्ट नहीं किया, या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट. जो कोर एक्ट है रिलेटेड टू एवरी वल्नरेबल सेक्शन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग एंड नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी इन करंट न्यूज. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है. इस बार क्वेश्चन सबसे आसान. जस्ट रीड द क्वेश्चन. Development and welfare schemes for the vulnerable by its nature are discriminatory in approach. Do you agree? Give reasons for your answer. उन्होंने किसी एक vulnerable section पे पूछा? नहीं. कोई एक स्कीम पूछी? नहीं. वो जनरली पूछ रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स का बेसिकली आपको एनालिसिस करना है, लेकिन एक चीज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट हाउ इनहेरेंटली इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच. दैट इज, इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग वन सेक्शन अगेंस्ट द अदर. दैट्स ऑल दैट नीड्स टू बी डन. इज दैट वेरी क्लियर? लेट्स लुक एट इट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज several development and welfare schemes to assist vulnerable people. We are establishing this. Now, the following answer will explore
whether the assertion that these schemes are discriminatory or not. Because whether they are discriminatory or not, that all depends upon your perspective and interpretation. देखने का नजरिया. Is it making sense for everyone? ठीक है. You need to tell me, is the question clear for everyone? ठीक है. Now, how or why it may seem, हम ये नहीं कह रहे it is discriminatory. We are saying it may seem discriminatory to some. The first thing is exclusionary targeting. देखो यार, जब भी आप कोई वेलफेयर स्कीम लेकर आते हो, हम जनरली से रेयरली इट इज यूनिवर्सल, क्योंकि उतने तो रिसोर्स हमारे पास है नहीं. सो ऑफन द स्कीम्स आर कंडीशनल और दे हैव सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल, जननी सुरक्षा योजना, दैट इट इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. But the point here is, it is only available to those women who are above 19 and only for first to live birth. See, intention is good. They want to control the incidences of adolescent pregnancy. They want to discourage child marriage. They want to encourage family planning. वो सब ठीक है, intention सही है, लेकिन इस process में a considerable section gets discriminated, who genuinely needs the benefit of the scheme. Is that very clear? सोचो कोई young girl getting pregnant, तो adolescent pregnancy में तो और chances होते हैं maternal mortality rate के high होने के, और ऐसे में conditional cash transfer is also not being ensured with respect to institutional delivery. तो हो सकता है कि they are not going to the clinic to get the delivery of the child, and it might result into infections and maternal mortality. तो इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन नहीं था डिस्क्रिमिनेट करने का, लेकिन इन दिस प्रोसेस डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली इज हैपनिंग. इज दिस वेरी क्लियर? सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, स्कीम्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वो ये कहता है आपके पास लैंड होनी चाहिए, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द बेनिफिशियरी इन द स्कीम. So in that process, you are actually excluding the landless people who are actually more vulnerable. Did you get the point? Similarly, geographical targeting होती है. एक concept पढ़ते हैं ना, aspirational district. So there are some special provisions, चाहे health, education, social empowerment of everyone who's living in aspirational district. Special provision. You have approximately 112 aspirational district. ऐसा हो सकता है ना, there is this one district which does not come under aspirational district, but it consists of some people who are impoverished, who do not have access to affordable education or health. Their interest is getting discriminated. Did you get the point? कि एक के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए हम डेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बट वो इनहेरेंट डिजाइन ऐसी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है. और यही क्वेश्चन है कि इनहेरेंट ही नेचर ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा. ये तो वही बात है कि कहें कि कैपिटलिज्म है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है. अरे कैपिटलिज्म का इनहेरेंट नेचर है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो वो तो डिजाइन फ्लॉ है. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट, पावर्टी लाइन क्राइटेरिया. ये तो हमेशा, इसीलिए तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स लेकर आए थे कि पावर्टी लाइन क्राइटेरिया इज वेरी बाइनरी. इट इज जस्ट डिमार्केटिंग पुअर फ्रॉम नॉन पुअर. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही थी, वो अभी बात करते हुए याद आया था, इसलिए है नहीं यहाँ पे. कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग मिडिल इन इंश्योरेंस सेक्टर. नाउ लिसन, लेट अस सपोज रिच पीपल, मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल. पुअर पीपल को इंश्योरेंस कहाँ मिल रही है? आयुष्मान भारत में. रिच को इंश्योरेंस वो खुद अवेल कर लेगा या उसको जरूरत है नहीं. अब मिडिल क्लास हेट्रोजेनस है, जिसमें एक मिडिल क्लास होती है लोअर मिडिल क्लास. चांसेस ऑफ फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बर्डन. अब उनको तो सबने भूल गए. स्कीम बनती है पुअर के लिए, किसी ने सोचा ही नहीं कि उस पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर भी बहुत सारे वल्नरेबल लोग हैं. दे आर मोर वल्नरेबल टू फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी. और यहां पे रिलेटिव डेप्रीवेशन ज्यादा होगा, बिकॉज इनिशियली दे वर नॉट पुअर, बट बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस नाउ दे हैव बिकम पुअर. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक कहता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/6 ऑफ इंडियाज पॉवर्टी. Currently, out of pocket expenditure is 48.8%. Ideally, it should not be more than 15%. So we still have a long way to
go. But did you understand my point? That जो just ऊपर है उनका भी ध्यान रखना जरूरी है. Next, identification documents. That is major issue. I was actually trying to analyze. तो identification documents हो सकता है आप बोलो कि आधार बनवाना and all is free of cost और ऐसा कुछ नहीं है. Sometimes it is not the direct cost. It is the indirect cost. कि आधार बनवाना कॉस्टली नहीं था, वो तो फ्री था, लेकिन जहां आधार बन रहा था ना, वहां जाने और आने में पूरा दिन लग गया, आने जाने का पैसा और जो रोज की मजदूरी थी वो उसका भी पैसा गया. तो इंसान का 500-600 रुपए लग गए आधार बनवाने में. आपने कहा आधार फ्री है, लेकिन कॉस्ट तो लगी ना. Did you get my point? ठीक है. Sometimes क्या होता है, there are some kind of documentations which are only available at urban center unless and until rural areas में camp लगे हों. तो that also becomes a challenge. Many a times basic document नहीं होता. For example, birth certificate. That also becomes a challenge. One of the examples, starvation death in Jharkhand, because there was lack of Aadhaar-based biometric authentication. इसमें किसकी गलती थी? कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि डॉक्यूमेंटेशन बनवाना है. सो इनहेरेंट फ्लॉ है दैट इट हैज रिजल्टेड इनटू डिस्क्रिमिनेशन. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आज ही न्यूज में आया है कि जो सोशल ऑडिट यूनिट्स हैं एमजी नरेगा के, दे आर इन द स्टेट ऑफ पैरालिसिस. अगर आप सिर्फ ये एक लाइन भी अपने नोट्स में लिख लो ना, पॉइंट आ गया. कहां लिखोगे वो बता देती हूं. ये जो लास्ट पॉइंट है ना, एक्सक्लूजन एरर, कि पहली बात तो आउटरीच नहीं है, और दूसरा अगर आप एक्सक्लूड हो जाते हो तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है. अब यहां पे हम एक एग्जांपल दे सकते थे दैट सोशल ऑडिट यूनिट्स विद इन एमजी नरेगा इज इन स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मेनी स्टेट्स. व्हाई? दे आर अंडरफंडेड, दे डोंट हैव एडिक्वेट पर्सोनल्स एंड दोस पर्सोनल्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड. पूरे उस आर्टिकल में से सिर्फ इतना पॉइंट भी निकाल लेते तो योर जॉब इज डन. ऐसे आपको करंट अफेयर को यूज करना है. थैंकफुली आज आ गया तो बताने में आसानी रही कि करंट अफेयर्स में से ये 4 लाइन निकालनी है बस, एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स एंड योर जॉब इज डन. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है. बाकी वही पॉइंट्स, जैसे अब लोन वेवर स्कीम है. सपोज करो लोन भरना था, जब आप कुछ लोगों ने भर दिया, कुछ लोग नहीं भर पाए, बाद में सरकार ने वेव कर दिया, तो जिसने टाइमली भरा उसको तो बुरा लगेगा ना कि क्यों ही भरा. जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ कि पिछले 3-4 साल के चालान माफ हो गए, तो जिन लोगों ने टाइमली चालान भर दिया उनका तो पैसा गया, और जो डिले हैं फाइन की जगह उनका चालान माफ हो गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना. ठीक है. अब लोग क्या करेंगे, या टाइम से मत भरो, क्या पता बाद में सरकार माफ कर दे. आर यू गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? आर दीज पॉइंट्स मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है. ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ये मैं पर्सनली अमर्त्य सेन्स अप्रोच को कोट किया है मैंने, कि कभी कभी आपकी वेलफेयर स्कीम्स ये देखती ही नहीं है कि वो किसके लिए वेलफेयर कर रही है. देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, ध्यान से सुनना, इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो. वन इज इंडाउमेंट, अदर इज इंटाइटलमेंट. इंडाउमेंट मतलब हाउ मेनी, मतलब एसेट्स यू हैव. Entitlement means ability of you to transform those assets into goods. मैंने आपको लैंड दी, पर आप में काबिलियत ही नहीं थी उस लैंड का कुछ करने की, so the land has been wasted. मैंने आपको बोला ये लो 50,000 रुपए, कोई एक छोटा सा काम शुरू कर दो, आपको पता ही नहीं था कि वो 50,000 रुपए का क्या करना है, वो 50,000 रुपए आपके वेस्ट हो गए. Did you get the point? So you have to focus on entitlement. That is why Amartya Sen says capability approach. ये development of welfare scheme से कुछ नहीं होगा. सबको काबिल बनाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि welfare schemes की जरूरत नहीं पड़ेगी. Is this very clear for everyone? Is it making sense? ठीक है. But वो एक साइड था. It may seem discriminatory, but actually objective तो अच्छा ही है ना. Positive discrimination, to correct the historical injustice, to reduce the divide between haves and have-nots. And दूसरा, constitution कहता है कि सरकार को करना है. Under Article 39A, under Article 46 of the Constitution, कहता है ना, to promote the economic and educational interest of backward classes and SC/ST. That is Article 46, and then you have Article 39A. And finally, you can conclude. This
is my favorite line. That is why I've written it here. That now instead of welfare, it's high time that we move to right-based approach. उसका रीजन है, जब आप कहते हो ना कि मैं आपका वेलफेयर कर रहा हूं, इसका मतलब है आई एम ऑलरेडी पुटिंग माई सेल्फ एट अ हायर पेडिस्टल एज कंपेयर टू यू, एंड इट इज बिलीव दैट वी आर डूइंग सम ऑब्लिगेशन. We are not doing any obligation. It is their right to have equal access to resources. Is that very clear? So a shift is required from welfare to right-based approach. Resource generation is required to ensure universal coverage. And whatever barriers are there, चाहे वो physical हो, legal हो, financial हो, it needs to be overcome. We cannot keep on giving the reasons कि ये problem की वजह से ये हो रहा है. पता है ना problem क्या है? दूर कर लो. Is it making sense for everyone? Now, in all the three questions, do you understand the structure now? Are you understanding how it is supposed to be prepared? Is it clear for everyone? ठीक है? Just one thing. तीसरा यूनिट ये है, हर साल सवाल आता था, ये शायद पहला साल है कि न जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन है, न जीएस पेपर 2 में. That is poverty and hunger. Is that very clear? Otherwise, it's a topic which needs to be prepared. ऐसे तक आए हुए हैं poverty पर. So this has to be prepared in detail. Is this very clear for everyone? ठीक है? On this note, can we conclude the session? हाँ जी. हाँ. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. पर वो स्कीम नहीं है यार. हाँ. ठीक है ना? एक्ट आएगा. बट यू कैन डेफिनेटली राइट. इनफैक्ट एक और बात बताऊं, एक पॉइंट और लिख सकते थे. अब आप सोचना आप कैसे लिखोगे. कभी कभी ये वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू हम स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि जब आप रिजर्वेशन बेनिफिट्स देते हो, तो हम दे तो अच्छे इंटेंशन से रहे हैं, लेकिन एक इंटेंशन ये हो जाता है कि स्टीरियोटाइप जनरेट हो जाता है कि इफ यू आर सक्सेसफुल इट इज ओनली बिकॉज यू हैव रिजर्वेशन बेनिफिट. So the stereotyping further gets aggravated. एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम कोई पिंक इनिशिएटिव लेते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द women, पिंक इन itself is a stereotype. So inherent discriminatory nature. So हाँ जी, बिल्कुल. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनफैक्ट पीएम किसान योजना जो है उसका एक मेजर फॉल्ट ही यही आ रहा है डीबीटी को लेकर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर. एब्सोल्युटली यस. एक और पॉइंट दे सकते हो अगर ऐसे, तो कई पॉइंट्स. अब जैसे हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, तो कई कई जगह क्या हो रहा था, पुलिस स्टेशंस पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का बर्डन बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा एक काम करो, नॉन कॉग्निजेबल जितनी भी कंप्लेंट्स है वो ऑनलाइन फाइल करो. अब लोगों में डिजिटल लिटरेसी थी नहीं. यहां पे आते हैं मिडिलमैन. आपका पर्पस अच्छा था, आप चाह रहे थे कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस का नोट ले और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी जो फाइलिंग ऑफ कंप्लेन है वो ऑनलाइन हो जाए. तो हम चाहते थे थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेस, बट इसमें हम ये नहीं देख पाए कि मेजर इशू इज डिजिटल लिटरेसी इज मिसिंग. सो एंटर्स इनटू द पिक्चर मिडिलमैन. वो पैसे ले लेते हैं कंप्लेन फाइल करने का, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. तो बिल्कुल डिजिटल डिवाइड की बात हम कर सकते हैं. वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा यार. ठीक है. सो इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर द टॉपिक. विल यू बी एबल टू डू इट नाउ? ठीक है, चलो. ऑन दिस नोट वी विल कंक्लूड द सेशन. बाय पीपल, ऑल द बेस्ट.